Hello friends, in last video I have discussed with you on can and could. You know it, can means शकतो, could means शकला. हिंदी में can यानी सकता, could यानी सका. But I would like to discuss with you one point right now today, that is can means be able to. Now we have to learn how to use be able to in daily communication. See, can means be able to. In Marathi शकतो, in Hindi सकता. Be means what? Be means to be चे form. You know what is to be form? See, is amar to be form in present tense, was were to be form in past tense, and will be shall be to be form for future tense. First of all, I would like to discuss one chart of to be form. You must know it. Now see here, what is to be form? I would like to teach you what is to be. If you think about to be form, see, to be चे form in singular form and plural form. Singular number, plural number. If you think about present tense, is, am, is a to be form. It is in singular aspect. ekvachani. Then are, it is a plural. It is to be form for present tense. Now see the to be form for past tense. Was is a to be form for past tense. It is singular. It is useful for singular. Were, it is for plural. Then think about future tense. See, will be, shall be. There is no matter of singular and plural. Shall be, will be. There is no matter of singular and plural. If you think about helping form, auxiliary चे form, does is singular one. Sometimes do may come, and do mostly come in plural number. Same, if you think about past, that is did will come in both sides, here and here also. It is common. Think about future tense. Helping form is will, shall, or shall, will. You can say auxiliary चे form, helping form, which help the verb. You can say helping verb to it. Now, if you think about to have चे form, in present tense, you know it, mostly we use have or has. Has mostly come for singular and have mostly come for plural. Then had will come here for past tense. Had, and here will come will have, shall have. It is common for both. There is no matter of singular, there is no matter of plural. Shall have, will have, shall have, or shall have, will have. That is common. It is to be form, helping form, and to have form. Now I would like to guide you properly how to speak in English with the help of be able to. You know, construction, subject plus can plus V1 plus object plus extension. In place of can, you can use be able to, because our main focus is today be able to. Think about the sentence. तू येऊ शकतो. हिंदी में तुम आ सकते हो. You can say in English you यानी तुम, शकतो, सकते हो यानी can, you can come. In place of can, you have to use be able to. Be means to be चे form. To be means is am are. So you can write here you are able to come. Can means be able to. Be means is am are. You is plural. You are able to come. Means तुम इंग्लिश में बोल सकते हो you can come. You can use next sentence for it. You are able to come. मीन्स तुम में आने की क्षमता है, तुम में आने की एबिलिटी है, तुम में आने की कैपेसिटी है. यानी you are denoting your strength, your capacity, your ability to come. Then तुम्ही येथे बसू शकता. तुम यहाँ बैठ सकते हो. तुम मीन्स नंबर 1, सकते हो सकता नंबर 3, बसू नंबर 4, यानी बाकी 4. See, तुम्ही means you can sit here. तुम्ही येथे बसू शकता. तुम यहाँ बैठ सकते हो. In place of can, you can use you are able to sit here. ही बातमी खरी असू शकते.
यह समाचार सच हो सकता है। दिस न्यूज यानी यह समाचार। कैन बी, बी इज अ V1 हियर। यू सी बी मीन्स असने, हिंदी में होना। सेकंड फॉर्म वाज, थर्ड फॉर्म बीन, बी वाज बीन। So here B came as a first form of verb because we want subject plus can plus V1, so that this news can be true. Now you want to use be able to. How can you use? This news is able to be true. Understood? Then number 2, मी बांसुरी वाजवू शकतो। मैं बांसुरी बजा सकता हूँ। मैं मी नंबर 1, शकतो नंबर 2, वाजू नंबर 3, बांसुरी नंबर 4। मी मीन्स आय, शकतो मीन्स कॅन, प्ले मीन्स वाजवणे, अ फ्लूट। यू कॅन से इन प्लेस ऑफ कॅन यू वांट टू नो डिनोट बी एबल टू। सी आय एम एबल टू, बी मीन्स टू बीचे फॉर्म इज एम आर। I am able to play a flute. Understood? Same. See sentence 3. मी 100 किलो वजन उचलू शकतो। मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ। मैं यानी आर, सकता हूँ यानी कैन, लिफ्ट यानी उठाना, 100 kg weight। In place of can, you can use I am able to lift 100 kg weight. You can make number of sentences like such. मी त्याला मारू शकतो, मैं उसे मार सकता हूँ। I can beat him. I am able to beat him. मी त्याला मारू शकत नाही, मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। I cannot beat him. I am not able to beat him. मी त्याला मारू शकतो का? मैं उसे मार सकता हूँ क्या? Can I beat him? Am I able to beat him? मी त्याला मारू शकत नाही का? मैं उसे नहीं मार सकता हूँ क्या? Can I not beat him? Am I not able to beat him? Am I able to beat him? See, धूम्रपानामुळे कॅन्सर होऊ शकतो। धूम्रपान से कॅन्सर हो सकता। Smoking can cause cancer. Then, in place of can, smoking is able to cause cancer. Can means be able to. Smoking, धूम्रपानामुळे कॅन्सर होऊ शकत नाही। धूम्रपान से कैंसर नहीं हो सकता। स्मोकिंग कैन नॉट कॉज कैंसर। स्मोकिंग इज नॉट एबल टू कॉज कैंसर। कैन नॉट मीन्स कैन मीन्स बी एबल टू, कैन नॉट मीन्स बी नॉट एबल टू, इज नॉट एबल टू मीन्स स्मोकिंग इज नॉट एबल टू कॉज कैंसर। देन कैन स्मोकिंग कॉज कैंसर, म्हणजे धूम्रपानामुळे कैंसर हो शकतो का? धूम्रपान से कैंसर हो सकता क्या? In place of can, you can use be able to. Is smoking able to cause cancer? Means is able to. In place of can, is smoking able to cause cancer? Then धूम्रपानामुळे कैंसर हो शकत नाही का? धूम्रपान से कैंसर नहीं हो सकता क्या? Can smoking not cause cancer? Is smoking not able to cause cancer? Can not means is not able to. You can use here. Or is not, you can make short, isn't smoking able to cause cancer? Then why can smoking cause cancer? धूम्रपानामुळे कैंसर का हो शकतो? धूम्रपान से कैंसर क्यों हो सकता? तो why is smoking able to cause cancer? See, I discussed with you on topic can means be able to. See how to use can with the help of new word. See, ridden or stricken means ने पीडित, पछाडलेला, ग्रस्त। जैसे if you apply debt means कर्ज, debt ridden या debt stricken, इसका मतलब होता है कर्जग्रस्त। कारण debt means what? कर्ज, आणि debtor कर्जदार। Do you know? Think about flood. Flood means poor. हिंदी में बाढ़। Flood ridden.
पूरग्रस्त, हिंदी में बोल सकते हैं बाढ़ग्रस्त. और इन प्लेस ऑफ रिडन यू कैन यूज स्ट्राइकन आल्सो. रिडन एंड स्ट्राइकन बोथ हैव सेम मीनिंग. कीप इन माइंड. फियर, फियर मीन्स डर, भीति. फियर रिडन भयग्रस्त, भीतिग्रस्त. लाइस, लाइस मीन्स उवा, हिंदी में बोलते जू. रिडन ग्रस्त, लाइस रिडन उवांनी ग्रस्त. इफ आय कॅन से इन सच अ वे, त्याचं डोकं उवांनी ग्रस्त आहे. हिज हेड इज लाइस रिडन. लाइस का सिंगुलर फॉर्म है लाउस. लाउस म्हणजे एक मुंह, एक जू. और लाउस का प्लूरल है लाइस, अनेक हुआ, नंबर्स ऑफ लाइस. अंडरस्टूड. सी सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा. सुपरस्टिशन रिडन अंधश्रद्धेने ग्रस्त, हिंदी में अंधविश्वास से ग्रस्त. ये शब्द कैसे बना? डू यू नो? सुपरस्टिशियस, TIOUS. सुपरस्टिशियस मीन्स अंधश्रद्धाळू and superstition means अंधश्रद्धा. The superstition ridden या स्ट्रायकन यू कॅन से अंधश्रद्धेने ग्रस्त किंवा अंधविश्वास से ग्रस्त. जैसे भारत अंधश्रद्धाग्रस्त देश आहे. इंडिया इज सुपरस्टिशन रिडन कंट्री. यू कॅन से ग्रीप रिडन दुःखग्रस्त, दर्दग्रस्त. ये शब्द कैसे बना? ये नाउन है. ग्रीप इज नाउन. इसका वर्ब है ग्रीव. ग्रीव म्हणजे दुःख असणे. सेकंड फॉर्म ग्रीव्ड, थर्ड फॉर्म ग्रीव्ड. देन फेमाइन. फेमाइन मीन्स दुष्काळ, अकाल. फेमाइन स्ट्रायकन या फेमाइन रिडन अकालग्रस्त. 2 वर्षापूर्वी महाराष्ट्र दुष्काळग्रस्त होता. 2 years before महाराष्ट्र was फेमाइन रिडन. You can say. Then poverty. Poverty word made from poor. Poor means what? गरीब. Poor से बना poverty. Poverty means गरीबी. Poverty stricken or poverty ridden, गरीबी ग्रस्त. आता you see, after all we are going to learn right now be able to. Can means be able to. Now I am going to use this word in be able to form and I want to speak in English. मी पूरग्रस्त लोकांना मदत करू शकतो. मैं बाढ़ग्रस्त लोगों को मदद कर सकता हूँ. I am able to help flood hidden people, flood stricken people. इसको हम निगेटिव बना सकते हैं. मी पूरग्रस्त लोकांना मदत करू शकत नाही. मैं बाढ़ग्रस्त लोगों को मदत नहीं कर सकता. Who? I am not able to help flood hidden people. मी पूरग्रस्त लोकांना मदत करू शकतो का? मैं बाढ़ग्रस्त लोगों को मदत कर सकता हूँ क्या? Am I able to help flood hidden people? Am I not able to help flood hidden people? Am I able to help flood hidden people? तो ये हो गया flood hidden. और help की जगह you can apply assist. Assist means मदद करने. इसका सेकंड फॉर्म assisted, थर्ड फॉर्म assisted. इसका नाउन फॉर्म assistance और उसका एजेंट नाउन assistant. In place of help you can use assist also.